Okay, sir. Thank you very much, sir. Thank you. Okay. Sir, actually, hello, sir. I'm audible. Hmm. Yes. I think we have uploaded some of your video Okay. on YouTube, sir. It is there Okay. of your classes. Okay. Okay. Yes, sir. So So what we you are want me to do? no issue, sir. Just we are recording for that only. Okay. Okay. Whatever Okay. you are. Yeah. Yeah, I know. Yes. Yes. Okay. So ultimately, it is going with your name and under AICTE course. Sure. Sure. No issue. Okay. Okay. So today we will start with a small signal model. Okay. A small signal model. So yesterday we have discussed two models. The first model is known as hybrid pi model and second model is known as RE model or T model. So there are two models for this. The first model is you can say first model is hybrid pi model. And we are having one dependent source. This is round, but this is dependent source GM into VBE, where this terminal is known as collector terminal. This terminal is known as emitter terminal. And this terminal is known as base terminal. इस terminal का नाम क्या होगा? This terminal is a base terminal. This resistance is a R pi and potential drop across resistance is equivalent to VBE or V pi. So this is base emitter and collector. This model is known as hybrid pi model. Hybrid pi model. And what we know that GM is known as transconductance. This GM is known as transconductance. This is ratio of IC by VT.
approximately equal to 40 times of DC current. ध्यान रखें. And this is also ratio of small IC divided by VB. One more very important relationship for this is GM into R pi GM into R pi is equivalent to beta. है ना? And one more model for this analysis we are having is known as, जो एक और मॉडल है इसके एनालिसिस के लिए, वो कौन सा मॉडल है? दैट मॉडल इज नोन एज RE model. RE model. The next model is RE model. So what we can say in RE model, we know that GM, the first relationship is GM into RE equal to alpha. और हमने क्या पढ़ा था? R pi वो रेजिस्टेंस है जो हमने बेस से कनेक्ट किया है. तो इमीटर से अगर कनेक्ट करना है तो दैट इफेक्ट विल बी R pi डिवाइडेड बाय 1 प्लस बीटा इज इक्विवेलेंट टू RE. This is a very important relationship, small signal relationship. And what RE model is? You can say the RE model for this is given by, let me take one. Okay, then I can take one. है ना, ये टर्मिनल कौन सा है? दिस टर्मिनल इज नोन एज बेस टर्मिनल. ये टर्मिनल कौन सा है? बेस टर्मिनल. देन वी आर हैविंग वन डिपेंडेंट सोर्स. तो ये मैंने ऐड कर दिया, वन डिपेंडेंट सोर्स. एंड दिस टर्मिनल इज नोन एज collector terminal. What is value of this dependent source? Generally we the symbolic representation for dependent source is this. It's a diamond shape, but okay, it's fine. And what is collector current? So you can say collector current is alpha into IE, or you can say this is GM into VBE, or you can say this is equivalent to beta into IB. You can use any of the relationship. This will not affect your analysis. You can use any of the relationship. Now what we can have next? You can say the next we are having emitter terminal. So you can say this is emitter terminal. This value is RE. This is VBE. This current here is IB. We are having one current. We are having one current which is IB. This current is IB. This current is IC, and this is the symbol. This is the small signal model. This is a small signal model. Model for transistor. This is small signal model for transistor. And what is how we can use it? I should say whenever a resistance is connected
whenever a resistance is connected at emitter terminal, then we can use this model. Whenever a resistance is connected in this terminal, we can use this model. So this is the highlighted point in the discussion. So what I can say, this is important point. So this is RE model and RPI model. You can use any of the model at any time. So let's start. Let's analyze all of the transistor so that we can have the idea of where to use which transistor. So we have three configuration. Analysis of BJT based amplifier. Okay. So first there are three types of amplifier, or you should say a small signal circuit. First one is common emitter, common base, and common collector. Common emitter. Next is common base, and third one is collector. So we are having the three configuration for small signal analysis जिसको मैं analyze करने वाला हूँ. And first configuration is what? Common emitter. Let's see how it looks like. So first is common emitter. So what I can say, in common emitter, you are having one emitter terminal which is connected to ground, and one collector terminal from which you will take output. Emitter is common between input and output. So what should I say? Emitter is between
input and output. This is the idea. Next circuit is common base circuit. So let's take one more circuit, which is known as common base. In common base circuit, this is we will take output across collector terminal. इसको RC लिख दें या RO लिख दें. Small signal out and base is connected to ground. I have eliminated all the DC supplies and collector is connected to, emitter is connected to, what I should say, emitter is connected to supply. So let's connect one. This is RS and this is VS. This type of configuration, when input is supplied at emitter terminal, you can say input is connected between base and emitter. Input is connected to base and emitter, है ना? By taking base at ground, है ना? You can say your base is connected to, let's say this is base terminal, and output is taken across collector terminal. Collector terminal. So output is, we are taking output across the collector terminal. So these are two characteristics of, or these are two supply and output terminal of common base. What is when we will use this, the idea is the circuit is having excellent frequency response and the small signal resistance is low, है ना? This is for low small signal small signal resistance and high output resistance and a low small signal input resistance. So one very important term is input resistance, and what I can say, the output resistance is high. अभी ये प्रूव करेंगे हम सारा सर्किट एनालिसिस लगा के. आउटपुट रेजिस्टेंस is high. This is generally used for transmission lines. है ना? इसको कहाँ यूज करते हैं? We use this in transmission lines for impedance में. देखेंगे इसको भी. Next is common collector. The next, अभी ना इनका एनालिसिस स्टार्ट करेंगे. So we can say the next is common collector, or also known as, because of this small signal image, this is known as voltage follower
or popularly known as emitter follower. Voltage follower or also known as emitter follower. So this is common collector. Let's see how common collector looks like. So what I can say, in common collector, the input is connected to the input is connected to the in common collector. This is our collector terminal, and collector terminal is connected to ground. Input is supplied at base terminal and output is taken across, है ना, जो भी कॉमन है उस टर्मिनल को आप ग्राउंड कर दे, एसी ग्राउंड. सो दिस इज टेकन अक्रॉस. दिस इज RE या आप इसको RL ले ले, and you are taking output across this, and this configuration is known as common collector configuration. Common collector configuration. So this is the idea for three types of amplifier, transistor BJT based amplifier. So one by one हम सभी को start करते हैं, and the first amplifier is a common emitter. और common emitter का first part हम discuss कर चुके हैं. So let's start with common emitter with emitter resistor. पहला जो हम analysis करेंगे amplifier का वो कौन सा करेंगे? The first amplifier we will analyze is common emitter with emitter resistor. So let's start. इससे पहले वाला फर्स्ट वाला हम कर चुके हैं. So first amplifier is common emitter, and देखेंगे कि इसका एडवांटेज क्या है. So पहले हमने पढ़ा था एक एम्पलीफायर में, उसको भी बना देता हूं, कॉमन इमीटर. तो मैंने ये बताया था आपको कि इन कॉमन इमीटर this is VCC, this is RC, and this is emitter is connected to ground. This point is known as RS, and this is VS. This is total idea. हमने क्या देखा था यहाँ? We have lot of points. मैंने आपको बताया था कि input resistance of this amplifier is equivalent to R pi. Input resistance कितना था इसका? R pi. What is output resistance of this amplifier? Output resistance is equivalent to RC. है ना? Keep this thing in mind. So we are having input resistance, output resistance. Then what we can say? The voltage gain of this amplifier is minus times of a loading factor, R pi divided by RS plus R pi into GM into RC. ये क्या था? वोल्टेज गेन. अब देखते हैं. नाउ माय आइडिया इज टू अप्लाई कनेक्ट वन रेजिस्टेंस एट इमीटर टर्मिनल, और एक रेजिस्टेंस इमीटर टर्मिनल में कनेक्ट करने से क्या इफेक्ट आता है उसको हम देखना चाहते हैं, है ना. सो लेट्स स्टार्ट विद द कॉमन इमीटर विद इमीटर रेजिस्टर. सो नेक्स्ट सेकंड वन इज, and what is our intention, what we expect from a voltage amplifier? We want, at least we want input resistance to be as high as possible, है ना. So this is our requirement. So what I can say, okay, let's start. So
we are having one transistor based amplifier. This is my VCC, this is RC, this is my RE. What's new in this? This RE. ये RE क्या करेगा? This RE will provide negative feedback. क्या करता है ये RE? ये RE provide करता है negative feedback. This is the idea. Now what else we are having? One supply RS and this is VS. From where we will take output? You can say from this point we will take output. This is our idea for the circuit. How to draw the small signal model for this? अब क्या करें हम? What is our basic choice? We are having one resistance at emitter terminal, so we will go for RE model, है ना? RE at emitter terminal. RE at emitter terminal. We are having one RE at emitter terminal, so we will go for RE model या T model. We will go for T model to analyze this. किसी दूसरे से भी करेंगे तो कोई बुराई नहीं है, but this T model will reduce your calculation. So what I can say, let's start. T model बना लेता हूं मैं. सबसे पहले फंडामेंटल क्या है उसका T model का? Let's see. This is GM into VBE. GM into VBE. Then this is our collector terminal. This is our base terminal. And this is our RE plus minus VBE. This is the total idea for the circuit. अब क्या करना है? अब जरा सर्किट को देखते जाएं कि कलेक्टर और ग्राउंड के बीच में क्या लगा है? एक RC लगा है. तो ये कलेक्टर है, यहां से मैं बना देता हूं ग्राउंड. This is RC and we are taking output across this, है ना? फिर देखें बेस और ग्राउंड के बीच में लगा है एक रेजिस्टेंस. तो लेट्स अप्लाई वन रेजिस्टेंस बिटवीन बेस एंड ग्राउंड. ये हमने लगा दिया. Then this terminal is emitter terminal, and what I can say, between emitter and ground one RE is connected. So you can say one RE is connected between emitter and ground. So this is my total circuit, है ना? This is total circuit for common emitter with emitter resistor.
चलो अब कैलकुलेट करते हैं. The first term we want to calculate for this is input resistance कि इसका input resistance कितना होगा, है ना. तो let's start with input resistance. Input resistance, so you can say input resistance. So input resistance is what? This resistance is known as input resistance. This resistance is known as input resistance, है ना. सप्लाई को हटा के जो रेजिस्टेंस देखेंगे हम, that is input resistance Ri. अब सप्लाई को हटा के कितना रेजिस्टेंस दिखता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो जरा देखिए, द रेशियो ऑफ इनपुट वोल्टेज इन इनपुट करंट इज नोन एज इनपुट रेजिस्टेंस. सो कैन आई से इफ दिस करंट इज, अच्छा व्हाट इज इनपुट करंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो सोर्स सप्लाई करेगा दैट करंट इज इनपुट करंट. सो व्हाट आई शुड से, द इनपुट करंट इज बेस करंट. इनपुट करंट कौन सा है, द इनपुट करंट इज बेस करंट. चलो करते हैं स्टार्ट. तो व्हाट आई कैन से, दिस करंट इज IC, this current is IB, so you can say this current is IE. तो कितना लिख दूं कि यहां कोई आपने सपोज सोर्स लगाया है, तो RE प्लस RE इंटू IE इक्वल टू, लेट्स से आई एम टेकिंग दिस पोटेंशियल एज ए V in, है ना. दिस पोटेंशियल आई एम टेकिंग एज ए V in, है ना, इनपुट वोल्टेज V in. But input current is not IE. Input current is what? Input current is IB. So there is a relationship between IE and IB. So this is RE plus RE into 1 plus beta times of IB equal to V in. So what we can say, the input resistance is ratio of, the input resistance is ratio of V in divided by IB, which is RE plus RE, RE plus RE into 1 plus beta. क्या हुआ है, it will increase the input resistance and good for voltage amplifier. So using RE at emitter terminal will provides a negative feedback and will improve, what we can say, our concluding remark for this is will improve input resistance. तो किस फैक्टर से इंक्रीज करेंगे, दिस विल इंप्रूव द इनपुट रेजिस्टेंस बाय फैक्टर ऑफ 1 प्लस बीटा, है ना. इस फैक्टर से क्या कर देगा, इंप्रूव कर देगा. तो बहुत अच्छी बात है ये, तो देयर इज नो इश्यू. चलो आगे बाकी पैरामीटर कैलकुलेट करते हैं. द नेक्स्ट पैरामीटर विल बी द आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ दिस एम्पलीफायर. एंड द आइडिया ऑफ आउटपुट रेजिस्टेंस इज वेरी सिंपल. व्हाट यू कैन से, दिस इज द आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ द एम्पलीफायर. यहां से देखने पे जो भी दिखेगा दैट रेजिस्टेंस इज नोन एज आउटपुट रेजिस्टेंस बाय मेकिंग इनपुट इक्वल टू 0, है ना. तो इनपुट को अगर 0 बनाया तो VB 0, VB 0, तो ये करंट सोर्स ओपन सर्किट. सो यू कैन से द सेकेंड पॉइंट ऑफ द डिस्कशन इज आउटपुट रेजिस्टेंस. द आउटपुट रेजिस्टेंस
output resistance is equivalent to RC, which is same as कॉमन इमीटर एम्पलीफायर. विदाउट इमीटर रेजिस्टेंस के भी आउटपुट रेजिस्टेंस कैसा था? विदाउट इमीटर के भी आउटपुट रेजिस्टेंस कैसा था? आउटपुट रेजिस्टेंस सेम था. तो यहां तक तो कोई इश्यू नहीं है. तो इनपुट रेजिस्टेंस का वैल्यू आपने बढ़ा दिया है, विच इज गुड फॉर अ वोल्टेज एम्पलीफायर. थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं. व्हाट अबाउट गेन, है ना? करंट गेन कितना होगा उसके बारे में बात कर लेते हैं. जरा देखिए करंट गेन, वोल्टेज गेन के बारे में बात कर लेते हैं. लेट्स टॉक अबाउट द वोल्टेज गेन. Voltage gain of this amplifier. So you can say V output for the amplifier is given by minus times of GM into VBE. This is the value of current multiplied by RC. And this is common emitter amplifier. That's why you are always having one minus sign. Output is always 180 degree out of phase. So minus sign is because of common emitter amplifier. So what you can say? Minus sign because of common emitter amplifier. Now we are interested in VBE. So what is value of VBE? So can I say what is resistance? RE or we can say one more thing that we can say one more thing that V output is equivalent to minus GM into VB is what? VB is IE into RE. IE into RE into RC. Why? Because here current is IE, so IE into RE will give you VB. And what is IE? We know that VS divided by RS plus RE plus RE into 1 plus beta times of IB is equal. This is value of IB. K लूप में एक ही करंट फ्लो होगा, तो यहाँ इमीटर करंट है, यहाँ इमीटर करंट है, यहाँ बेस करंट है, तो एक ही साथ लिख दिया मैंने. एंड व्हाट इज वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस? सपोज वी आर इंटरेस्टेड इन VBE, so you can say VBE, or fine, we can have directly the value of IE. So value of IE for the system is given by just multiply this IB here. इस IB का मल्टीप्लाई यहां कर दें. If I multiply this I1 plus beta here, then you can say the value of IE is equivalent to VS divided by RS plus RE plus RE into 1 plus beta. Now, यही सारा रिलेशनशिप हम कहाँ रख देंगे? We will put this relationship into the V output equation, है ना? तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है. विच वन? ये इक्वेशन को मैं हाईलाइट कर देता हूं.
This is very important relationship. And what I can say, V output is equivalent to minus GM into RC into RE minus GM into RC into RE into IE. IE is given by VS divided by RS plus RE plus RE into 1 plus बीटा। इस इक्वेशन को थोड़ा मैं और इस एक्सप्रेशन को थोड़ा मैं उस फॉर्मेट में लिखता हूं जिस फॉर्मेट में आपको थोड़ा समझ में आया कि हमने क्या किया है, आरई को इंट्रोड्यूस करने का इफेक्ट क्या हुआ है, उस फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करता हूं। सो वी कैन से आरई प्लस आरई into 1 plus beta is much greater than RS, source resistance. So you can say V output by VS, voltage gain, is given by minus GM into RC divided by RE divided by RE plus RE into beta, because 1 plus beta times 1 plus beta can be written as beta if beta is high. There is no issue in doing this. आगे देखते हैं. So what I can say, V output by V input is minus GM into RC divided by, इस RE को मैं ऊपर नीचे डिवाइड कर देता हूं तो कितना बचेगा, this is 1 plus RE divided by 1 plus RE divided by RE into whole equation multiplied by beta. So this is our, okay, let's modify this equation. This term is not here, है ना, हमने IE की वैल्यू लिखी तो IE की वैल्यू में 1 प्लस बीटा नहीं था, यहाँ हमने गलत लिख दिया इसको, तो मैं इसको हटा देता हूँ, है ना। 1 प्लस बीटा को इधर लाए थे IB में, तब IE बना था ना, तो यू कैन रिमूव दिस टर्म, इसको आप रिमूव कर सकते हैं. नाउ दिस इज योर करेक्ट एक्सप्रेशन. सो व्हाट यू कैन से दैट V output, okay, this is minus GM into RC, this is cancel, this is 1 divided by 1 plus RE divided by RE. You know that GM into RE equal to alpha, and alpha for the transistor is approximately 1. For high beta transistor, alpha is approximately 1. So you know that GM into RE is equivalent to 1. So what is value of 1 by RE? The 1 by RE is equivalent to GM. So I can write this. The voltage gain will be minus GM into RC divided by 1 plus GM into RE. And this is the effect of negative feedback. कि नेगेटिव फीडबैक में आपने देखा है
What is effect of negative feedback? You can say due to negative feedback, देखो विदाउट फीडबैक गेन कितना था -gm इंटू आरसी, और नेगेटिव फीडबैक विदाउट फीडबैक गेन अगर एओएल है या ए है तो विद फीडबैक कितना हो जाता है एओएल इंटू बीटा। तो आपका जो गेन है वो कितने से कम हो गया है 1 प्लस जीएम इंटू आर ई से कम हो गया है ना, ये इतने से कम हुआ है। तो दिस इज वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ common emitter with emitter resistance. Otherwise this amplifier is good from resistance purpose, है ना, input resistance is high so you can have less loading, है ना। high input resistance means what? Less loading, है ना, loading is less in this. high input resistance means less loading, है ना। loading factor will be r pi, not r pi, you can say this is okay, this is re plus re into 1 plus beta divided by 1 plus rs so you can say this is rs plus re plus re into 1 plus beta, and we know that re plus re into 1 plus beta is much higher than rs, so loading factor is approximately you can say it's less than 1, but okay, it is less in comparison to the common emitter. So in that case amplification bhi dega, and loading effect is also less, so good for amplification. You can say this is good, better than common emitter, good amplifier. So this is the idea for common emitter with emitter resistor. I hope यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है. So you can check this. क्या किया हमने कि इमीटर पे एक रजिस्टर था, तो हमने क्या बनाया इसको, हमने बनाया इसका आरई मॉडल. आप आरपाई मॉडल से भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट आरई मॉडल विल गिव आंसर विद द लेस कैलकुलेशन, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग इट. फाइन. सो दिस इज आवर डिस्कशन ऑन कॉमन इमीटर विद इमीटर रजिस्टर. चलो आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे की क्या कहानी है. The second amplifier is common base amplifier. चलो करते हैं स्टार्ट. The next one is common base circuit. Common base circuit. यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, आई होप.
करते हैं स्टार्ट. Okay. So analysis of next amplifier, which is common base amplifier. Maybe amplifier may not be amplifier, but yes, common base with small signal analysis. Let's start. Common base small signal model. So what I can say in common base circuit, let's draw the common base circuit. Common base, so base is connected to ground. So I am taking this as connected to AC ground. Supply is connected to which terminal? You can say supply is connected to emitter terminal. So let's take supply at emitter terminal. तो मैं ले लेता हूं supply at emitter terminal. So this is emitter terminal और यहां दे दिया मैंने एक supply. This is source resistance, unavoidable source resistance RS, and this is VS. Then we are having one collector terminal. We are having one collector terminal. Then one output is taken across. You can say this is load resistance or RC is also fine, है ना? आप ध्यान रखिए इनपुट एंड आउटपुट रेजिस्टेंस आर आल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट बिसाइड्स एम्पलीफिकेशन, है ना? शायद एम्पलीफिकेशन से भी बहुत ज्यादा, बिकॉज यू कैन increase the gain by using multi-stage amplifier. So है ना, maybe amplification is not that important part of the amplifier. चलो देखते हैं how it works. Let's see. What I can say in this, okay, let's make स्मॉल सिग्नल मॉडल. और स्मॉल सिग्नल मॉडल कौन सा बनाएंगे इस बार? बिकॉज वी आर हैविंग वन रेजिस्टेंस एट इमीटर टर्मिनल, सो वी विल गो फॉर आरई मॉडल, है ना? दैट विल गिव्स यू आंसर विथ रिलेटिवली ईज. सो वी आर हैविंग वन okay, so we are having one बेस टर्मिनल. तो ये हमने ले लिया एक बेस टर्मिनल, ठीक है? What should I say? This terminal is base terminal. Then we are having one collector terminal. This is alpha into IE. Whatever you can write, beta into IB you can write, or you can write GM into VB. Everything is fine with this. Then this is our collector terminal.
कलेक्टर टर्मिनल में है ना। आइडिया वही है कि बेस इमीटर जंक्शन पे जितना फॉरवर्ड बायस हुआ है उतना ही आपका सिग्नल क्या होगा, उतना ही सिग्नल एम्पलीफाई होगा, है ना, उतना ही करंट कलेक्टर करंट पे फ्लो होगा। देन वी आर हैविंग वन इमीटर टर्मिनल। ये हमने फंडामेंटल सर्किट बना लिया। दिस इज आर ई एंड दिस इज VBE. This is total मॉडल फॉर द सर्किट। अब कलेक्टर से, इसका कलेक्टर कहां आया, ये कलेक्टर, कलेक्टर से ग्राउंड के बीच में एक आरसी कनेक्टेड है, तो मैं एक आरसी और आउटपुट या लोड कनेक्ट कर देता हूं, तो यू कैन से और अब ये जो पूरा सर्किट बन जाता है ये आपके नेटवर्क एनालिसिस का शायद सिंपलेस्ट सर्किट होगा जिसको आपको एनालाइज करना है। वंस यू हैव दिस मॉडल, और हम आगे देखेंगे कि इस मॉडल को बनाने की भी कोई जरूरत नहीं है, आप स्मॉल सिग्नल एनालिसिस भी ट्रांजिस्टर को देख के ही कर सकते हैं। वी डोंट नीड दिस मॉडल्स। फिर क्या देखें, बेस टर्मिनल इज कनेक्टेड टू ग्राउंड, so you can say base is connected to ground and through emitter one RS is connected, so you can say one RS is connected this is VS and this is connected to ground. So this is RE model for common base amplifier. ये कौन सा है, this I can say RE model or T model for common base, है ना। Now what are the important parameters are this, input resistance, output resistance, voltage gain. Let's talk about the everything. Input resistance कितना होगा, output resistance कितना होगा, so you can say what is input resistance, so you can say that if this terminal voltage is V in, है ना, जितना यहाँ ड्रॉप होगा that is V in, तो V in divided by I in is known as input resistance. चलो देखते हैं कि how we can analyze this. चलो, the first point which we want to calculate for this is input resistance. Input resistance. देखो इस पॉइंट का रेजिस्टेंस कितना है, 0, और इसका कितना है, वी इन, तो वी इन माइनस 0 डिवाइडेड बाय आर ई, तो इनपुट वोल्टेज इज वी इन, इनपुट करंट इज आई, वी टेस्ट या आई टेस्ट मान लो या आई इन मान लो, तो दोनों का रेशियो कितना आ जाएगा, यू कैन से द रेशियो ऑफ बोथ इज वी इन सपोज डिवाइडेड बाय वन करंट विच इज आई इन। मैंने मान लिया कि यहां से जो ये सोर्स लगाया ये आई इन करंट ड्रॉ कर रहा है, तो व्हाट इज इनपुट रेजिस्टेंस, आर ई, दिस इज इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ दिस एम्पलीफायर। या मैं ऐसा बोलूं कि वी आर लुकिंग फ्रॉम दिस टर्मिनल, इनपुट रेजिस्टेंस मींस दिस। कोई परेशानी नहीं है, बट इनपुट रेजिस्टेंस इज व्हाट, यू कैन से आर ई इज इक्वलेंट टू आर पाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस बीटा। इसका मतलब ये हुआ कि भैया इसका इनपुट रेजिस्टेंस तो बहुत लो है, आर पाई किलो ओम था, किलो ओम को अगर 100 से डिवाइड कर दोगे तो 10 या 11 ओम या 15 ओम 20 ओम जैसा इनपुट रेजिस्टेंस होगा, है ना, विच यू कैन यूज।
which you can use as a 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 input resistance. So input resistance is very low for this, low input resistance, है ना? एंड है ना, कितना गुना लो? 100 गुना कम है. किससे कम है? 100 गुना कम, या 1.5 बीटा टाइम्स कम है फ्रॉम कॉमन इमीटर. तो है ना, जनरली वी यूज दिस एज ए लो रेजिस्टेंस है ना. दिस इज द वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स. एंड सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स इज a better frequency response. Better frequency response. So we use this as a for signal receive, है ना, signal receiver from the transmission line. क्या करेगा? ये लो इनपुट पे सिग्नल रिसीव करेगा और उसको ट्रांसमिट करेगा हाई आउटपुट रेजिस्टेंस पे, है ना. दिस कैन बी, है ना, इंपीडेंस मैचिंग पर्पस के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं. सो दिस इज द आइडिया फॉर द सर्किट. नेक्स्ट इज okay. So this is the idea for the circuit. Now input resistance is RE and input resistance is low, है ना. Input resistance is low input resistance. What I should say? Low input resistance. Okay. Now let's calculate the output resistance. How we calculate output resistance? We can calculate output resistance by taking input equal to 0. If we take input equal to 0, what I can say? If Vin equal to 0, that make VB equal to 0. So I equal to 0. So output resistance is fine. What is output resistance? By looking at this terminal, है ना, by making V in 0. इनपुट को 0 करने पे जो रेजिस्टेंस मिलता है, that resistance. इनपुट को क्यों 0 किया? Because VB is responsible for making the output. So I can say the output resistance RO is equivalent to RC. And output resistance is same as common emitter, है ना. Output resistance common emitter हो या common base हो, है ना, या common emitter with emitter resistor हो, सभी का कितना है? RC है ना. RC is the common emitter with emitter resistor. चलो ये भी हो गया. Now we are interested in the voltage gain. What is the voltage gain of this circuit? इस सर्किट का voltage gain कितना होगा? चलो उसको भी देख लेते हैं. What is the voltage gain of the circuit, है ना. So what I can say, the voltage gain of the circuit. The voltage gain of the circuit. इस सर्किट का voltage gain कितना होगा उसकी बात कर लेते हैं. So you can say the output of this circuit is equivalent to V out is equivalent to minus
अल्फा इंटू IE इंटू RC। ये कितना होगा आउटपुट? कैन आई हैव द वैल्यू ऑफ IE? सो यू कैन से यू कैन हैव IE इन दिस डायरेक्शन ओनली। IE करंट किस डायरेक्शन में मिलेगा? इस डायरेक्शन में। तो यू कैन से 0 माइनस VS डिवाइडेड बाय RE प्लस RS is equivalent to IE. There should be no objection in this. ये जीरो है, ये VS है, तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस हुआ माइनस VS डिवाइडेड बाय RS divided by RS plus RE will gives you IE. Now we can say V output is equivalent to minus alpha into IE, which is minus of VS divided by RE plus RS into RC. So what you can say, V output by V input, you can say, okay, V V output V output is equivalent to alpha divided by RE plus RS into RC. And what is value of alpha? You can write the value of alpha is equivalent to the value of alpha is equivalent to GM into RE. Let's compare this result with the previous one. So you can say the voltage gain will be GM into RC divided by RE, which is can जिसको हम डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा RS by RE. Or you know that alpha is approximately 1, so you can say GM is equivalent to 1 by RE. So you can say the voltage gain of common base is equivalent to GM into RC divided by 1 plus RS into GM, which is kind of similar to the common emitter. So काय के लिए यूज करते हैं? we use this for impedance matching, है ना? तो कॉमन बेस ट्रांजिस्टर को आप कहाँ यूज करोगे? यू विल यूज दिस एज ए इनपुट स्टेज, है ना? जब आपके पास कोई लो रेजिस्टेंस पे कोई सिग्नल अगर आपको लेना है, आप नहीं चाहते कि रिफ्लेक्ट हो सिग्नल, सो यू कैन यूज एट दैट पॉइंट. सो क्या करता है ये? यू कैन से कॉमन बेस इज ए इम्पीडेंस ट्रांसफॉर्मर, है ना? एक्सेप्ट द सिग्नल एट लो फ्रीक्वेंसी, है ना? what operation this perform? This is है ना? What you can say, it accept the signal at low frequency and
Ri is low, Rout is high, है ना? Accept a signal at low frequency and deliver it to the high frequency. So this is the fundamental working of this transistor, है ना? अगर मैं ऐसा बोल दूं कि gm into rs is greater than 1, तो कितना हो जाएगा? gm and gm cancel, it's rc by rs. So this is the idea of common base, है ना? And the frequency response is excellent. अभी हम इसमें कैपेसिटर लगा के देखेंगे हाई फ्रीक्वेंसी पे जो c pi और c mu एक्टिवेट होते हैं, है ना? So frequency response is best among all configuration, है ना? Better frequency response. Better frequency response. So this is the idea for the circuit, common base, है ना? Impedance transformer. So with this note, let's try some question based on this amplifier circuits. जो दो हमने पढ़े हैं उस पे एक आध क्वेश्चन ट्राई करते हैं, then we will go for the common collector. चलो देखते हैं. Okay. Let's start. So I have one question. I have one question based on this concept, and question is this. Let's take one example. So in a transistor, what is given? These parameters are given. कौन-कौन से पैरामीटर दिए हैं? जरा बना लेते हैं इसको. Okay. So what I can say, this is one transistor. This resistance is 20K. This resistance is 10K. Then this is 3K. Then we are having one more resistance, which is 2.3K. Let me clear this.
This is 2.3K. Then a CC2 coupling capacitor is connected. Then a 3 kilo ohm resistance is connected. Then we are taking output from this terminal. Okay. This potential is given as 9 volt. Then this potential is given as 9 volt, and these are big fat capacitors. जितने भी capacitors दिए हैं extremely large. CC1, and one more capacitor is given as what is meaning of this capacitor? All this capacitor will be the open circuited for all this capacitor will be open circuited for DC analysis and will act as a short circuit for AC analysis. So keep this thing in mind. All capacitors open for DC analysis, and it behaves as a short circuit at the frequency of interest, है ना? Frequency of interest. Frequency of interest पे कैसे बिहेव करेंगे? शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेंगे. कब पूछा गया है ये क्वेश्चन? दिस क्वेश्चन इज ओके. VBE दिया है आपको इस क्वेश्चन का. Base to emitter potential drop is 0.7. So you can say base to emitter potential drop is 0.7. और आपसे पूछा है तो what is the voltage gain of this amplifier? इस एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन कितना होगा? चलो बनाते हैं. So स्टेप बाय स्टेप आई विल सॉल्व दिस. आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं, है ना? कोई स्टेप बाय स्टेप करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बट ठीक है. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर गेट. तो हम इसको कैसे लेंगे? वी विल सॉल्व दिस स्टेप बाय स्टेप. देखें जरा कैसे काम करेगा. सो फर्स्ट स्टार्ट विद द डीसी मॉडल, है ना? इसका डीसी मॉडल बनाता हूं मैं. कैसा दिखेगा डीसी मॉडल, है ना? ऑल दिस इज द आइडिया फॉर द डीसी मॉडल कि सारे जो आपके कैपेसिटर्स होंगे, दिस कैपेसिटर विल एक्ट एज ए ओपन सर्किट. सो फर्स्ट पार्ट इज डीसी एनालिसिस सो दैट वी कैन कैलकुलेट द IC, GM and all parameters. So this is nine volt. Then okay, 9 volt. Then we are having one capacitor, then one resistor. Then this is RE. This is 2.3K. This is 3 kilo ohm, है ना? This is 20 kilo ohm. This is 10 kilo ohm. And this potential drop is having DC drop of 0.7. So this is the idea for the circuit. ये सर्किट के लिए आपको क्या दिया है? सर्किट का आइडिया दिया है कि सर्किट डीसी के साथ कुछ ऐसा बिहेव करता है. अब आगे देखते हैं. This is voltage divider biasing scheme and beta is infinite. So we will go for this. यहाँ थेवेनिन्स वोल्टेज निकाल लेते हैं. कितना होगा कि यहाँ जाने वाला करंट अगर जीरो है, इफ बेस करंट इज जीरो, I can say what will be the amount of current in series of these two transistor?
the current I will be 9 divided by 30K. And what is VTH? The VTH is potential across this terminal. So I can say the VTH will be 9 divided by 30K multiplied by 10K, which is 3 volt. तो यहाँ का पोटेंशियल कितना आया मेरे पास 3 वोल्ट. तो यहाँ का पोटेंशियल कितना आएगा 3 माइनस 2.7 बिकॉज ऑफ फॉरवर्ड बायस जंक्शन. तो इमीटर करंट कितना फ्लो होगा? द इमीटर करंट विल बी 1 मिली एम्पियर. और जितना ही इमीटर करंट होगा उतना ही कौन सा होगा? कलेक्टर करंट भी कितना होगा? 1 मिली एम्पियर, बिकॉज बीटा इज वेरी हाई. एंड बीटा इज वेरी हाई मीन्स IC इज अप्रोक्सीमेटली और इक्वल टू IE. दिस इज गिवन. सो IC इक्वल टू 1 मिली एम्पियर. तो हमारे पास IC का वैल्यू आया, द IC इज इक्वलेंट टू IC फॉर दिस सर्किट इज इक्वलेंट टू IC फॉर दिस सर्किट इज इक्वलेंट टू 1 मिली एम्पियर. और इसी पैरामीटर की तो रिक्वायरमेंट है मुझे. अब मैं क्या कैलकुलेट कर सकता हूं? GM कैलकुलेट कर सकता हूं. व्हाट इज GM? यू नो दैट GM इज IC by VT. And VT is given in this question as 25 millivolts. So GM will be 40 times of IC. और 40 times of IC से कितना हो जाएगा? 40 मिली एम्पियर पर वोल्ट. ये किसका वैल्यू आया मेरे पास? GM का वैल्यू आ गया. अब क्या करना है मुझे? इफ GM is available to me, I can calculate whatever I want to calculate. Let's say कैसे कि now AC equivalent of this transistor है ना. Let's start with the AC equivalent. AC equivalent of this transistor. AC equivalent कैसा बनाएंगे? AC equivalent, let's see. I have one. In AC equivalent, all capacitor will behave as a short circuited. तो बना लेते हैं. This is the circuit for AC है ना. चलो AC के लिए बना लेते हैं. This is our base. ठीक है. Then we are having one base terminal. Then we are having one emitter terminal. और emitter terminal के आगे क्या लगा है? एक कैपेसिटर लगा है. तो कैपेसिटर अगर शॉर्ट हो जाएगा तो what I can say, if capacitor behave as a short circuit, if capacitor behave as a short circuit, तो emitter भी कहाँ चला जाएगा? 0 पे चला जाएगा. So I can say this capacitor will behave as a short circuit. This capacitor behave as a short circuit. फिर कलेक्टर पे क्या कनेक्टेड है? यू कैन से कलेक्टर से कनेक्टेड है एक 3 किलो ओम रेजिस्टेंस. ये हमने कलेक्ट कर दिया 3 किलो ओम रेजिस्टेंस. फिर क्या देखा? कनेक्टर से एक कैपेसिटर के थ्रू 3 किलो ओम रेजिस्टेंस. और ये कितना है? एटलीस्ट दिस इज AC ग्राउंड. फिर यहाँ एक कैपेसिटर कनेक्ट था विच बिहेव एज ए शॉर्ट सर्किट, और एक रेजिस्टेंस यहाँ कनेक्टेड है 3 किलो. ओके फाइन. फिर क्या? बेस पे क्या लगाया है? इनपुट लगाया है. ओके. सो दिस इज पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना. यू कैन से दिस इज 20K, दिस इज 10K, और यहां लगाया है मेरे पास एक VS. सो यू कैन से यहां हमने यूज किया है एक VS.
सोर्स जीसी का, जिसका ही तो गेन बताने वाले हैं। here we are using when vs। ओके, लेट्स से हाउ इट वर्क्स। तो इसका डीसी बीटीएस तो इस बार 0 हो जाएगा, बट रेजिस्टेंस इज व्हाट, आरटीएच इज इक्विवेलेंट ऑफ 20k इन पैरेलल विद 10k। और 20k और 10k का पैरेलल कितना होगा, 20 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 30, और बीटा इंफिनिटी दे रखा है तो ये 0 ही हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। अब इसका मैं बना लेता हूं पाई मॉडल, बिकॉज वी डोंट हैव resistance at emitter, so we will go for hybrid pi model। We will go for hybrid pi model। Okay, so how we will go for hybrid pi model? I can say for hybrid pi model, this is my base terminal, this resistance is R pi, this is Vs, emitter is connected to ground, this is Gm into VBE, and this is RC. What is RC? 3 kilo ohm resistance है, so one is 3 kilo ohm resistance collector to ground, और collector to ground एक और resistance connected है, तो वो भी collector to ground के बीच में आ जाएगा। And you can say this is my output voltage। So what is output voltage? We can say the output voltage V out is minus Gm into VBE times of 3 kilo ohm, and 3 kilo ohm in parallel will make 1.5 kilo ohm। Now R pi is, we cannot find R pi because है ना, according to this R pi is equivalent to infinite। So क्या करेंगे, V out is VB is this potential, so you can say VB and VS are same, है ना, थोड़ा क्वेश्चन आसान कर दिया उन्होंने, तो VBO divided by VS is equivalent to minus GM। So what is value of minus GM? Minus of 40 milliampere per volt into 1.5 K। कितना वैल्यू होता है इसका, इसका वैल्यू होता है मिली किलो कैंसल, सो -60 वोल्ट पर वोल्ट इज द वोल्टेज गेन ऑफ दिस एम्पलीफायर। तो इस एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन कितना होगा, द वोल्टेज गेन ऑफ दिस एम्पलीफायर इज -60। -60 is voltage gain of this amplifier। I hope this is clear। Okay, so let's take one more question, one more circuit, and let's try। The next one is common collector, analysis of common collector circuit। Common collector amplifier, maybe amplifier, may not be amplifier, but yes, small signal analysis of common collector। So let's start how we can analyze a common collector। So let's start with the common collector।
Okay. In common collector circuit, what we can say, we are having this. This is collector. This is connected to ground. Then we are having one emitter from which we are taking output. So from this point, this is RL load, and from this we are taking output. And the signal is applied at base terminal. So you can say this is RS and this is VS. कौन सा configuration है? This is common collector, or I should say this is emitter follower configuration, है ना? This is emitter follower configuration. How it will work? Let's see. So we can draw the RE model because one resistance is connected to emitter terminal. So let's go for the RE model to analyze this. है ना? T model to analyze common collector in a circuit. है ना? Small signal of common collector. चलो करते हैं start. So in common collector we are having one base terminal. तो मैंने एक ले लिया. Okay. I am taking one base terminal. तो देख लेते हैं जरा कैसे काम करेगा ये. There is one resistance at base terminal, so I am adding one resistance RS, supply which is V signal. Then we are having one dependent source. तो एक बना देता हूं मैं alpha into IE, and this is connected to ground. फिर बना देता हूं मैं एक RE. So you can say this is my small signal resistance RE. Then you can say this is RL, and you are taking output across. This is my small signal model for the common collector circuit. So you can say a small signal model for common collector. है ना? So let's see what are the values of resistances and what is the voltage gain of this amplifier and everything for common collector. What is the input resistance of this? So first is input resistance. So first point in this calculation is
इनपुट रेजिस्टेंस। चलो कैलकुलेट करते हैं इनपुट रेजिस्टेंस। So you can say this is input resistance, सप्लाई को हटा के देखें आप क्या दिखता है आपको। This is input resistance, but believe this is very important for this analysis, that input current is base current and here current is emitter current. So you can say input voltage is what? The voltage which appears here is input voltage. So you can say V input divided by base current is input resistance for this amplifier, and you can say this is RE plus RL into 1 plus beta, which is approximately equal to common emitter with emitter resistance. So input resistance is high for this. Input resistance is high for this amplifier. What I can say, high input resistance. All right, good. Now we are interested in output resistance of this एम्पलीफायर। इस एम्पलीफायर का आउटपुट रेजिस्टेंस कितना होगा जरा उसको देखने की कोशिश करते हैं, है ना। सो हाउ वी कैन कैलकुलेट द आउटपुट रेजिस्टेंस? टू कैलकुलेट द आउटपुट रेजिस्टेंस, लेट्स स्टार्ट। आई शुड से दिस लोड को हटा के जो भी आपको दिखता है दैट इज आउटपुट रेजिस्टेंस। तो लोड को हटा दें और इनपुट को जीरो कर दें। There are two choices for two requirement of output resistance. What are the requirements? You can make this is R. तो इनपुट को जीरो कर दें, तो V सिग्नल को जीरो कर दिया तो कितना आया? This is RO is equivalent to है ना, इफ आई कनेक्ट दिस V सिग्नल इज इक्वलेंट टू जीरो तो ये कितना हो जाएगा? RS प्लस RE, है ना। वी कैन नॉट लीव इट ओपन, है ना, RS प्लस RE, बिकॉज आउटपुट इज डिपेंडेंट ऑन इनपुट। सो यू कैन से RO इज इक्वलेंट टू RE प्लस R सिग्नल, या यू कैन से इट्स अप्रोक्सीमेटली R सिग्नल। और आर सिग्नल में जो फ्लो होने वाला करंट है वो कितना है? यहाँ करंट है आई और यहाँ आई भी है, तो इसमें को कितने से डिवाइड कर दे? 1 प्लस बीटा से डिवाइड कर दे। ध्यान रखें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कैसे कैलकुलेट करेंगे आप जरा देखें कि इसका इक्विवेलेंट बनाते हैं हम टू कैलकुलेट द आउटपुट रेजिस्टेंस, है ना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैलकुलेशन ऑफ output resistance. The calculation for output resistance. Let's see how it works. We are having one V signal. And we are having one resistance R signal. Then we are having two resistances RE, and you are having one resistance RL. अब ध्यान रखें, here it is 1 plus beta times of RE and 1 plus beta times of RL if your input current is base current. If input current is base current. So what is output resistance? इसको हटा के you can say by removing the load को हटा के if you remove this,
then output resistance will be what? RE. लेकिन आउटपुट अगर यहां मैं एक लोड लगाता हूं, करंट सोर्स लगाता हूं, तो करंट सोर्स क्या ड्रॉ करेगा? इमीटर करंट ड्रॉ करेगा। तो RE आ जाएगा इमीटर करंट, IB की टर्म्स में 1 प्लस बीटा है। और यहां कितना आ जाएगा करंट? मगर मैं यहां बोलूं तो यहां करंट है IE, और यहां कितना आ जाएगा? IE डिवाइडेड बाय 1 प्लस बीटा, क्योंकि बेस टर्मिनल है। तो कितना हो जाएगा? R सिग्नल डिवाइडेड बाय 1 प्लस बीटा, है ना? This is again impedance transformer which accept the signal at higher frequency and transmit it to the low frequency. So this is idea for the common collector amplifier, है ना? It increases the fan out. So you can say this is output resistance calculation. और ध्यान रखें, output resistance is dependent on the input source resistance ना, output input पे depend करता है, reverse direction में भी. This is the first amplifier. Okay. Now voltage gain of this amplifier. So you can say, अब voltage gain का calculation तो बड़ा आसान है. Voltage gain को calculate करने के लिए how we will proceed that चलो फिर से बनाते हैं. The next is voltage gain calculation. The calculation for voltage gain of CC. Okay. So हमारे पास जो मॉडल था RE मॉडल, वो कैसा था? We are having this RE model. This is my okay. Alpha into IE. This is connected to ground. This is RS. This is V signal. This is RE. And this is RE. This is RL. And from this point, we are interested in V output. This is RE. This is VBE. So let's calculate the output voltage of this. Can I say the output voltage is what? We can say V output for the circuit is given by, यहां से करंट IE आएगा तो यहां भी जाएगा IE. So you can say IE into RL. और यहां फ्लो होने वाला करंट IB है. You can say the current here is IB. तो इसको IE divided by 1 plus beta रख देते हैं, and you can get answer in single KVL. So you can say the current IE is given by V signal, which is input, divided by RS divided by 1 plus beta plus RE plus RL. This is what? This is the value of emitter current. ये किसका value है? This is the value of emitter current. And what is output? You can say the V output for the circuit is given by IE into RL. So IE is what? So V output for the circuit is equivalent to
IE into RL. So this is IE, which is V signal divided by V signal divided by RS divided by 1 plus beta plus RE plus RL into RE. Let's say this ratio is less than 1. And this is not comparable. So you can say V output is equivalent to V output divided by V input is equivalent to RE divided by RE plus RL, which is less than or equal to 1. Highest RL, if don't, if RE is high, then you can say it is less than or equal to 1. That's why this is known as V output is approximately input equivalent to V input. So you can say V output is approximately equivalent to V input. That's why this stage is known as voltage follower stage. And current gain is highest because input current is IB and output current is IE. So current gain is 1 plus beta. Highest among all. Current gain is 1 plus beta, AI. So you can say current gain is high and output resistance is less. That's why this is generally used at output stage to increase the fan out. This amplifier is used at output stage. The common collector is used to increase the fan out of the amplifier. So this is our discussion on common emitter, common base, common collector. तीनों amplifiers को हमने समझा और क्या देखा कि in common emitter you can have, if you don't have emitter resistor, the input resistance is less, which is not good for voltage amplifier. If you are having input resistor, then its voltage gain is less, but you can increase the input resistor. Then next is common base amplifier. In common base amplifier, the input resistance is less, but output resistance is same as common emitter. Then we are having a common collector, which is input resistance is high, same as common emitter with emitter resistor, but output resistance is low, which makes this good for output stage amplifier. You can use CC as a output stage amplifier. Output stage amplifier. So this is the idea for the circuit. From tomorrow we will start with the discussion of. High frequency models for the transistor. How transistor behave at high frequency. So tomorrow is the day for high frequency discussion and Darlington pair, cascade and cascode. We will talk about cascade, cascode, Darlington pair. Then we will discuss high frequency model of the transistor. How the frequency response of common base is better than other two transistor. Frequency response. तो अगर आज की स्लाइड्स में देखा जाए तो we have started with the small signal model. After analyzing the small signal model, we are having one common collector arrangement, then common emitter with emitter resistor. Then we have analyzed the
common base arrangement, which is accept the signal at low frequency, low resistance and deliver it to the high resistance. Then we have one question, how many meter पे based. फिर हमने use किया voltage follower, and voltage follower the stage in which the input resistance is high but output resistance is low, which increases, and current gain is highest, which increases the fan out. This term we will use frequently in digital electronics. So it increases the fan out of the, it increases the fan out. So this is my discussion on transistor as a low frequency model. In tomorrow's class, we will start with the high frequency analysis of bipolar junction transistor. And thank you very much. किसी का कोई doubt हो तो you can ask, feel free. And if you want a new subject, you can ask. If you want, if you have any doubt in this, you can ask, feel free to ask. Tomorrow we will start with the high frequency analysis of bipolar junction transistor. In high frequency, there are two capacitors at both the junction will be effective, and we will talk about the Miller effect. The Miller effect and high frequency analysis. There are two junctions in the transistor. The one junction is, you can say there are two junctions in the transistor. The one junction is emitter base junction, and second one is collector base junction. So you can say two dielectric is isolated by two charge carriers are isolated, two charge carrier plates are isolated by dielectric. So this will form a capacitor. The one capacitor is known as C pi, which is this junction capacitor. इस junction का जो भी capacitor होगा, that capacitor is act as a C pi, and another capacitor is C mu. The C mu is capacitance at collector base junction, and C pi is the capacitor at emitter base junction. तो हम देखेंगे कि हाई फ्रीक्वेंसी पे जो दो इंटरनल कैपेसिटर जनरेट होते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी पे जो दो इंटरनल कैपेसिटर जनरेट होते हैं, हाउ विल दिस विल अफेक्ट आवर एनालिसिस, है ना. दिस इज हाई फ्रीक्वेंसी कैपेसिटर. हाई फ्रीक्वेंसी कैपेसिटर, है ना. That's why this is not a good all pass filter, है ना. ये कुछ फिल्टर बनाएगा कि लो फ्रीक्वेंसी पे हाई को पास करेगा, है ना. मिड बैंड फिल्टर है ये. केवल एक मिड बैंड गेन एक टर्म होती है कि किसी फ्रीक्वेंसी रेंज के सिग्नल को ही ये पास करता है, बाकी हाई फ्रीक्वेंसी और लो फ्रीक्वेंसी को क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा. तो दिस इज द आइडिया. We will talk about this tomorrow. Thank you very much.